Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. So the topic which we are going to study today, that is reading selection 5.3. It is a poem written by William Blake. So take out page 209, and the title of the poem is The School Boy. So students, first let me give you a very short intro about the publication of this poem, as it was published for the first time in the second half of Songs of Experience, which is known as a Black's masterpiece. And then after approximately 5 years later, after the publication of the Songs of Innocence in the year 1789, all these poems were later combined and republished together as a Songs of Innocence and Experience. So student, let's move towards the poem. Actually, in this poem, the poet says through the mouth of a schoolboy that it is very joyful to get up in the morning in summer, but he thought of going to school and passing the whole day under strict discipline is very depressing. मे बी बहुत सारे बच्चे मेरी इस स्टेटमेंट से एग्री भी हों कि एज अ स्कूल इन्वामेंट फॉर सम ऑफ द स्कूल बॉयज़ इज़ जस्ट इक्वल टू द डिप्रेस्ड इन्वामेंट. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्कूल आने के लिए रोते भी हैं, ज़िद भी करते हैं, खुशी से नहीं आते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन बीइंग अ टीचर और विलियम ब्लैक इसमें हमें सोल्यूशन बता रहे हैं. बीइंग अ टीचर वी शुड फाइंड आउट द सोल्यूशन कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, और ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ पाते. So students, in the school he has to spend time in the restricted environment and under the sharp eye of his teacher. जी, इसके साथ भी सब एग्री हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो खुशी से नहीं आते और फिर उनको 6 to 7 आवर्स भी स्कूल में गुजारने पड़ते हैं, वो भी अंडर द शार्प आई ऑफ हिज टीचर, मीन्स दे हैव टू डील और दे हैव टू फॉलो द वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ देयर टीचर्स. सो द बर्डन्स ऑफ बुक्स एंड स्टडीज़ मेक हिम मिजरेबल. डेफिनेटली जितना बच्चों पे बर्डन अगर डाला जाए, सो देन दिस काइंड ऑफ और सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बिकम वेरी मिजरेबल फॉर देम, एंड देन they are not able to study in a good way. So in this poem, the child requests to all the parents that they should not be so hard on children, and children are like birds and cannot bloom into flowers in harsh condition of life. So in this poem, the poet, he is comparing child, the schoolboy, with the bird, and then in the next stanza he is comparing the schoolboy with the bird also. That we will discuss in detail in the coming stanzas. So yes students, this is what we already explained. Let's move towards the theme. आपके इस poem जो main theme है जिस पे poet ने focus दिया है, so he is talking about the way he explored the themes of childhood, youth, as well as the themes of education, nature and freedom. अगर हम इन तीन चीज़ों को आपस में मिला दें, triangle बना दें, and then we start the discussion on the life of the school boy. So first of all, if we talk about the theme of education, no doubt they are getting the good education. बेशक हम उनको जितना भी बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर लें, लेकिन इफ़ वी आर नॉट हैविंग अ टच ऑफ नेचर इन दैट लर्निंग एनवायरनमेंट, सो देन डेफिनेटली जो स्कूल बॉयज़ होते हैं, जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो वो उस तरीके से खुशी से नहीं पढ़ पाते जब तक आप उनको एक बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके ना दें. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्रीडम, if we talk about our present current situation of educational system, so students, definitely freedom is something which you cannot get at school level or college level. कुछ जगहों पे college level पे ही freedom मिल जाती है, ठीक है. Universities, it is filled with the freedom, everything whatever you want you can, but फिर भी you have to do everything under strict restrictions. It doesn't mean कि you are free to do anything in university or college life. लेकिन यहाँ पे school boys के बारे में बता रहे, छोटे बच्चों के बारे में बता रहे कि they are not getting the freedom. Why they are not getting the freedom? Because they are sitting under the strict rules of their teacher, which are created by them. सो इस कंडीशन में विलियम ब्लैक हमें ये बता रहा है कि देन द मेन कैरेक्टर एंड द स्पीकर, द स्कूल बॉय, स्पेंड्स द पोएम डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द क्रूअल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. If the schoolboy, they are facing or they are getting the very strict rules as they are getting the formal education, so they cannot imagine about the freedom. Even they cannot imagine about the freedom that can be provided to them while sit in the environment, sit in the nature, so that they may get the freedom and they study easily according to their choice, which is not possible here. Now students, additionally Black celebrates youth and youth tied to nature as he commonly does with his poem. आपके youth, William Black के बहुत सारे poems में you will find the same themes like related to the youth, or related to the nature as well, ठीक है. freedom, nature, youth, childhood, आपको William Black के या romantic poets के poetry में ज़्यादातर यही चीज़ें आपको बहुत common मिलेंगी.
Now students, if we talk about the structure and the form of the schoolboy, structure और form पहले point से पहले ज़रा आप structure समझ लें. We are not talking about the literary devices here. In fact, we are talking about the form and the structure. So if we talk about, or if you just see, just look at your books 209 page पे ज़रा देखें. So that book having this poem having 6 stanzas and each stanza is having 5 lines, which is called quintets. वो वाली stanzas जो 5 lines पे base होती हैं, so it is known as quintets. And the first 2 stanzas rhyming is a scheme of, already मैंने आपको क्लास में rhyming scheme समझाया है, explain किया है, that how you will identify the rhyming scheme of each and every stanza. So इसको बस आप note कीजिएगा book में, that the rhyming scheme of first 2 stanza is A B A B B and A C A C C, while the last 4 diverge. जो आपके last 4 remaining stanzas है तो उनके थोड़े alternative endings हैं, जिसके rhyming scheme है A B C B B and A B A B B. देन स्टूडेंट्स, जो आपको एक नया टर्म यहाँ पे मिल रहा है, दैट ऑल लाइन्स आर ऑल अराउंड द सेम लेंथ एंड वेरी बिटवीन यूजिंग एनजम्पमेंट एंड इन पंक्चुएशन. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द टर्म दैट व्हाट यू मीन बाय एनजम्पमेंट. G students, you can find out the meaning in your own dictionaries. Otherwise, I have just downloaded the slide here. The running over of a sentence from one verse or couplet into another, so that closely related words fall in different lines. जो आपके closely related तकरीबन एक जैसे जो words होते हैं, जब वो closely related होते हैं verse to verse, line to line, so that is known as enjambment. Now students, if we talk about the literary techniques in this poem, तो इस poem में जो literary devices पोइट ने, विलियम ब्लैक ने यूज़ किए हैं, एक एलिट्रेशन है, एक एनाफोरा है और एक मेटाफर है. सो नाउ लेट्स गो थ्रू दीज 3 लिटरली डिवाइसेस. सबसे पहले the way he is talking about the metaphor. So the speaker, he is comparing his youth and happiness as well as his mental state while at school to the destruction of the plant. Like he is comparing the students with the plants, that it is a place. He is talking about the school कि अगर हम बच्चों को क्लासेस में, मतलब जिसको वो बच्चे प्रिजन समझते हैं, अगर हम उनको इस तरह ज़बरदस्ती रख के, जबकि उनको स्टडीज़ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो इन सिंपल वर्ड्स एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट दैट प्लांट. सो दिस इज़ ऑल एन एफर्ट टू कन्विंस his parents and he shouldn't ever have to go through his misery of school again. Well, this is what you will find out in the last stanza of this poem. तो इस लाइन को मैं आप लास्ट स्टेंजा में ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ज़रा लिटरेरी डिवाइसेस पे स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा. Alliteration is another important literary devices that appears throughout this poem. So it helps to increase the rhyme and the rhythm of the verses. जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने बताया कि इसमें लिटरली डिवाइसेस 3 है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है और एनाफोरा है. मेटाफर ये है कि द पोइट he is comparing the schoolboy with the birds. He is comparing the schoolboy with the birds, right, with the flowers, with the weather also, जो कि अब हम स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एलिट्रेशन, सो यू हैव ऑलरेडी नो दैट व्हाट यू मीन बाय एलिट्रेशन. एक्चुअली एलिट्रेशन इज दैट फिगरेटिव टेक्निक इन विच द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स विच क्रिएट अ रिदम एंड विच क्रिएट अ राइमिंग स्कीम इज नॉन एज एलिट्रेशन. और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एलिट्रेशन की एग्जाम्पल इन स्टेंजा 1 में 4th लाइन पे देखे स्काई लार्क सिंग. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एलिट्रेशन. नाउ और स्टेंजा 1 में, एंड यू कैन ऑल्सो सी द डे and dismay in the second day. 4th line के end में day and dismay. So again all these are giving and producing the same sound. जो आपके first alphabet है consonant sound, so it gives the same sound. So that's why it is the best example of the alliteration. Now students, if we talk about the anaphora. So what do you mean by anaphora? Anaphora works in a similar way to alliteration. It can be seen in the 3rd stanza with the repetition. जी anaphora का क्या मतलब है? ये भी तकरीबन alliteration से ही थोड़ा related है. You can see the best example of anaphora in 3rd stanza. यहाँ पे ज़रा आप 3rd stanza पे आ जाए, और 3rd stanza में 3rd और 4th line में the 3rd and the 4th line begins with the same word, that is nor. Same is the case with the next stanza. In the 5th stanza में आप लोग देख सकते हैं that the 2nd and the 3rd line begins with the same word and. So this is the example of the, again यहाँ पे भी repetition हो रही है. So this is not alliteration, बल्कि this is the example of the anaphora. You can see the definition of anaphora here also.
Now students, let's move towards the analysis of the schoolboy, or you can see the explanation. तो अभी हम stanza wise explanation करेंगे ताकि poem आपको और भी clear हो जाए. So students, just look at your books. The first stanza: I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant herdsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. G students, so in this stanza, the poet describes the pleasant scene of a summer morning in England, where summer is the most pleasant season of the year. He is expressing the thought of the child by saying that a child wakes up early in the fresh and delightful morning of summer with the singing of the birds on tree. Students, England में they are talking about the very best morning of summer season, क्योंकि वहाँ पे जो summer भी होते हैं, गर्मियाँ भी होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम वहाँ पे होता है. So that's why he is talking about the beauty of the nature, especially he is talking about the beauty of morning in England. If you just do not talk about okay, just forget about England, just talk about your own self. अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अपने environment की बात करें, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं और सुबह सवेरे वो जो प्यारी सुबह होती है, जिस वक्त सूरज अभी निकलने वाला है, बर्ड्स की चर्पिंग हम सुन रहे हैं, सिंगिंग सुन रहे हैं, सो इट रियली गिव्स अस वेरी गुड फीलिंग. लेकिन अगर कोई इसको ज़रा कीन ऑब्जर्व करे देन, सो दैट्स वाई then the poet, he is talking about the natural sights and sound, that is the hunters blowing horns and the skylark singing, so fill the heart with joy and excitement. This is what he is talking about, the school boy के जब वो सुबह सवेरे इस तरह प्यारे pleasant sound सुनते हैं, so it really fill their heart with joy and excitement, and the child really enjoys the company of nature. And definitely these are the types of companies he desires. So this is when he is happiest, a sentiment that many a romantic poet has expressed. Romantic poets definitely आपको उनकी पोइट्री में ज़्यादातर यही नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और यही क्रिएशन उनकी नज़र आएगी. Now students, the second stanza, but to go to school in a summer morn, or it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. The second stanza presents the exact opposite things that drive all joy away. In the first stanza, the poet, he was talking about the company of the schoolboy with the nature, but in the second stanza, now it is almost very different, very opposite. How? Let's move towards the second stanza. In this stanza, the poet says that after enjoying the company of nature in summer morning, the time comes for a child to get ready for school. लेकिन क्या होता है जब मॉर्निंग में वो इतनी प्यारी कंपनी छोड़ने के बाद, when the school boys and when those children get ready for the school, so it is a matter of almost disappointment for a child to attend the school in a sweet summer morning, where actually he wishes to enjoy the mirth of summer. The things takes away all the joy and excitement of the child. In order to go to school, he has to part with the sweet company of nature. According to poet, के बजाय इसके कि वो summer morning वो boring classes attend करे, so जबकि on the other hand he has to part with the sweet company of nature. वो nature को छोड़ के school जा रहा है. At school he does not feel happy under the strict supervision of his teachers. So the teachers appear to him as a cruel and unsympathetic people who snatch away his joy from him without even attempting or understanding the child's argue of unchecked freedom. This is what really happens with us also. अगर हम ये जानते भी हैं कि कुछ students, they are not comfortable in the class as they want freedom, they want to sit with nature, they want to enjoy their life outside the class, but students, this is what we cannot do. लेकिन तभी तो ये poet हमें बता रहा है कि at least we should know that which kind of environment they want, किस तरह environment में, किस माहौल में बच्चा पढ़ना चाहता है और बैठना चाहता है. लेकिन the time spent at school makes the child tired and depressed, or definitely this is what normally happens with you people कि जब आप लोगों का off time होता है, so how you feel depressed means you are not happy. Now students, let's move towards the third stanza. Then at times a drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower, worn through with the dreary shower. So now students, in this stanza, the poet expresses the weariness of a child, that in the school the child sits in a very sad and exhausted mood with drooping shoulders. ठीक है, बहुत ज़्यादा anxious mood में है, exhausted में है, stress में है बच्चा, he is not active, he is not energetic. So then in that way, or in these conditions, now like it is clear that the child is not averse to learning in general. He looks down all the time at his books in the classroom. He feels tired
tied with the burden of the studies and a shower of knowledge that his teacher tried to pour into his mind. वो टीचर जितनी भी कोशिश करे, if they try to shower the knowledge in their mind, but if the students they are very depressed, they are stressed, they are have just drooping shoulder के साथ बैठे हुए जैसे थके हुए हैं, so then they cannot learn in a effective way. So he feels tired with the burden of the studies, right, and the shower of the knowledge that his teacher tried to pour into his mind. He anxiously waits for the time to go home in order to resume his carefree life. Definitely उनको घर जाने की जल्दी ही इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे उनकी carefree life होती है and they do not spend the rest of the hours under the strict rules of teacher. Now students, fourth stanza, how can the bird that inborn for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy, but droop his tender wing and his youthful spring? In this stanza, the poet compares the child with the bird. A bird that is born cheerful and free can never sing sweet songs if put in a cage. This is what I told you in a beginning. अगर एक बर्ड आप उसको केज में रख दे, उनको कैद करके रखे, तो वो उस तरीके से गा नहीं सकते जिस तरह वो स्काई में एज अ फ्रीडम के होते हुए जितने वो खुश होते हैं. सो सेम इज़ द केस विद द चाइल्ड. जस्ट लाइक अ बर्ड, अ चाइल्ड इज़ बोर्न टू लीड अ हैप्पी एंड केयर फ्री लाइफ. एज अ बर्ड कैन not sing joyously in a cage. Similarly, a child feel himself imprisoned in the restricted atmosphere of the school. जिस तरह बर्ड फ्रीडम के नहीं उनको फ्रीडम नहीं मिलती जब उनको केज में रखा जाए, so they cannot sing freely. Same is the case with the school boy. उनको भी जब क्लास में हम एज अ प्रिजन केज में उनको कैद करके रखते हैं, so उनकी वो सारी खुशियाँ, उनके सारे वो जॉय हम टीचर्स स्नैच कर लेते हैं. Then all the time he is afraid of annoying his teachers and so he sits in the classroom in a very humble manner. All the time उसको एक डर होता है and he is afraid of annoying his teacher, जिसकी वजह से he sits in a classroom in a very humble, in a very good manner. The child has to forget his childish pleasure at school and therefore he protests against this sort of treatment. Indeed, a world full of rigid courses of discipline will ruthlessly take away the beautiful springs of a child life. Actually, इस stanza में हम ये भी कह सकते हैं कि maybe the poet is talking about the exam, आपके send-ups, exam, assessment, test series वगैरह. वो ऐसे ही होता है ना कि आपको टेंशन, स्ट्रेस जब होता है कि भाई अभी कल मेरा पेपर है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है तो भी टेंशन है, ना पढ़ा तो भी टेंशन है, आपको रूल सामने रख दिए जाते हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, इतने मार्क्स ऑब्टेन नहीं करोगे तो ये होगा. सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इस सारे चक्कर में डेफिनेटली आप खुश नहीं रह सकते और आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. लेकिन आई एम सॉरी टू से, बीइंग अ टीचर ये स्ट्रेस और ये टेंशन आप लोगों को देनी भी पड़ती है और आप लोगों ने लेनी भी पड़ती होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में एक वक्त आता है कि फिर आपको इसका फ्रूट ज़रूर मिलता है. स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दिस थिंग कि बेशक विलियम ब्लैक वट एवर ही इज़ टॉकिंग अबाउट, लेकिन आपका ये जो लर्निंग पीरियड होता है ये बहुत शॉर्ट होता है. क्लियर? अगर आप इसको सक्सेसफुली क्लियर करते हैं, सो बिलीव मी स्टूडेंट्स, आगे जाके आपको ही फ़ायदा मिलेगा. Now students, let's move towards the fifth statement. Oh father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in a springing day by sorrow and care's dismay. In this stanza, the speaker becomes extremely sad and pessimistic. The poet as a child appeals to all the parents to consider his request in the sympathetic manner. यहाँ पे poet एक child, एक school boy बन के parents को यही request कर रहा है that you need to take attention on this thing. You need to give focus to this point, that what I am saying, what the points that I want to mention. Like here the poet compares the child with a small flowering bird. If the birds are not led to bloom fully into flowers, or somebody cuts them heartlessly, then the spring season mourns the death of its budding flowers. इसी तरह अगर फ्लावर अभी पूरा खिला भी नहीं है और हम उसको काट दें, सो हाउ कैन वी सी दैट सीजन फिल्ड विद द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स. डेफिनेटली सेम इज़ द केस विद किड्स. जब बच्चों की भी हम बचपन से वो खुशियाँ ही छीन लेंगे, सो वो यूथ एज में आगे जाके किस तरह खुश रह सकेंगे, किस तरह वो अपने आप को टाइम दे सकेंगे. दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग. इन द सेम वे द चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज बर्थ, फ्रीडम एंड ब्लूम ऑफ अर्ली एज
व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ऑफ द हार्श ट्रीटमेंट एट स्कूल। बच्चों को वो खुशियाँ प्रोवाइड नहीं होती, फ्रीडम नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में होते हैं और वो अपने अर्ली एज को उस तरह अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह उनको चाहिए। Now, students, how shall the summer rise in joy, or the summer fruits appear, or how shall we gather what grief destroy, or how the mellowing air when the blast of a winter appear? Now, the last stanza, यहाँ पे ज़रा आप गौर से stanza book की तरफ देखें, that in this stanza the poet compels the parents to think over this matter of children sympathetically. मतलब he is giving stress to this point कि parents को इस मामले में सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि if he is giving stress to the parents, so it is something, if we just compare this poem with our own surrounding, so this is something which is not possible for us. बेशक पेरेंट्स का काम है आपको स्कूल भिजवाना, लेकिन प्लानिंग जो है दिस इज समथिंग विच इज़ डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज़ डन बाय योर हेड्स, विच इज़ डन बाय योर टीचर्स. सो डेफिनेटली हम टीचर्स को भी इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि अगर पूरा हफ्ता बच्चा स्ट्रेस में रह के कंटिन्यूसली पढ़ रहा है सो हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ा सा पढ़ाई के इन्वायरमेंट से हट के कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई, जिस तरह आप अगर अपनी स्पोर्ट्स की एग्जांपल ले ले, कंपटीशन ले ले, सीसीए क्लासेस जो आपकी होती हैं, तो स्टूडेंट्स वो सीसीए क्लासेस ही इसीलिए होती हैं कि जिसमें हम स्टडीज़ का टच नहीं रखते, बल्कि उसमें कुछ गेम्स हो गए, कुछ कंपटीशन हो गए, कुछ राइटिंग कंपटीशन हो गए, कुछ नाथ कंपटीशन, सॉन्ग्स कंपटीशन हो गए, जिस तरह लास्ट ईयर आप लोगों की एक्टिविटीज़ हुए थे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ डिफरेंट इन्वायरमेंट फ्रॉम लर्निंग इन्वायरमेंट, बट स्टिल it is something which cannot be apply in a daily routine. So the last stanza, like in this stanza, the poet compels his parents to think over this matter of children like in a very sympathetic manner. और वो एक example भी दे रहा है that he is also giving the example of a bird that grows into the flower in spring and the summer season. लेकिन अगर flowers जब mature होते हैं तो they converted into fruit. Same is the case with child. He is expected to become mature and wiser with age. So however, the strict conditions of schools are like the harsh weather of the winter season, and he should not be treated in the early rough and tough manner in his early childhood at school, ताकि और he shall lose the glory and wisdom of all his youth. Definitely फिर इन हालात में वो wisdom, glory, वो चीज़ें freedom youth age में उस तरह enjoy नहीं कर पाएंगे अगर early एज में ही हम उनको हार्श कंडीशन और हार्श एनवायरनमेंट दे दें. So students, this was the end of your poem. Hope that today's lecture is clear to you. If you have any kind of question, you may ask me. So what you have to do, you have to go through this poem again and try to do or write the explanation of this poem in your own words. So till next lecture, take care and Allah Hafiz.